आप सुनने जा रहे हैं उसमें कोई फैसला नहीं होगा, पर यह सुनवाई भर है शुरुआती, पर यह हमको कई सारी जानकारी देती है। इस मामले में हुआ यह है कि जो पिटिशनर हैं वो इस बात को लेकर आए हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया था, पर एक और कैंडिडेट हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। मामला यह है कि असल में दो शब्द हैं जिनकी वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। शब्द हैं अनिवार्य और वांछित। अनिवार्य और वांछित शब्द हैं। इनको अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो डिज़ायरेबल और रिक्वायर्ड, ये बात है मामला। या हमेशा क्या होता है रिक्रूटमेंट में, विज्ञापन में ऐसा लिखा रहता है कि प्रतिभागी में या आवेदनकर्ता में, कैंडिडेट में, जो अप्लाई करने वाला है उसमें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल आपको फुलफ़िल करना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। और दूसरा डिज़ायरेबल ये है, यानी हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। तो अब बस इन्हीं मामलों पे ये सुनवाई चलेगी। ये लोगों को समझने में मदद देती है कि किस तरह से मामला क्या होता है। इसमें मामला ये भी आएगा कि जहां विज्ञापन में कुछ लिखा हुआ था, मगर जो बॉडी है जो कंडक्ट कर रही है पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो क्या कह रही है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन में क्या है। तो इसी सुनवाई से काफ़ी समझ बढ़ती है। जिनका इस तरह का कुछ मामला होगा उनकी समझ बढ़ेगी। फैसला ये नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हमें समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं। Please let us have the facts clearly. What were the facts? What is the issue? Then we'll see the impugn order. You are a scientific officer. I was selected to the post in an advertisement which was issued In which year? This is the advertisement 2017. 2000? Mr. Sharma, you should come prepared with your facts. This is not the way. I do not expect you to argue this manner. This is of 2017. Huh? 17. 17? Then what happened? My lord, the recruitment process was initiated. Are Baba, once you are selected, then what happened? Then it was challenged by respondent. Who is respondent? My lord, the respondent was also a candidate. But not selected. But not selected. Then I was found to be more meritorious, and thereafter I was given appointment. All right. When were you given the appointment? My lord, I was given appointment 2018, 23. And when was it challenged? My lord, he challenged it in 2018. Itself. Now, how the single judge has dealt with the challenge? My lord, What were the grounds of challenge? Of challenge was that there are two qualifications which are prescribed. One was essential and other was desirable. The candidate who challenged it was having essential as well as desirable qualification. I was having essential qualification. Not desirable. Not desirable. Both were called for interview. In interview, the marks were awarded by the panel, and I was found to be more meritorious. Therefore, I was granted the appointment. He challenged it on the ground that a candidate who is not having desirable qualification should not be called even for interview. Now, the PSC faced a situation whereunder it found only two candidates who are having essential qualification, me and respondent. My lord, the minimum number of candidates which were required to be called was 10. If the candidate who is not having desirable qualification is excluded, then he will be the only candidate who was to be interviewed. Therefore, then what is the sanctity attached to the desirability of the qualification? Desirability was under the rules only. This was not an essential qualification. May not be. Suppose somebody is having a qualification which is also prescribed in the eligibility criteria, but not essential but desirable. Now, if that person is available, why he should not be preferred to the person who does not have desirable qualification? He and I both were called. We were interviewed. And as per process, both were awarded marks. And then the selection agency tested that who is found to be more meritorious. After awarding of marks, it has been found that I am more meritorious under the process.
and therefore I was granted. Now, may I know your qualification which put you on a higher pedestal than the petitioner respondent? My lord, it was on the basis of interview mark, my lord. Interview marks. This is the professor was Now, what is the requirement for calling you for interview? Let us see the advertisement. my lord. Who shall be called for interview? Which has been placed, Where is that? my lord. It is at page 46. Page 45. It's very faint. We can't read. इसका रिकॉर्ड भी तो होगा. रिट का रिकॉर्ड है. कितने पिटिशन है? Let me first see the document which restricts the persons to be called for interview. Yes. Eligible है? Yes, लिख रिकॉर्ड में है इसमें नहीं है. यहाँ पर ये क्या आवेदन पत्र केवल नहीं आप यहाँ पढ़ रहे हो ना नहीं पढ़ नहीं एनेक्स P2 है क्या? जी एनेक्स P2 में पैरा 2 है. वांछनीय अर्हता देखिए अनिवार्य अर्हता तो ये आ गई आपकी शैक्षणिक रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि और दूसरा राष्ट्रीय अभिलेखागार या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था में से पुराने संस्थान में प्रतिष्ठित और वांछनीय में है संरक्षण का 5%. हाँ वांछनीय पर क्षमता वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के अनुकूल होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर ये तो क्लियर है ना वहाँ पे. माइल. तो इस पे तो जो अथॉरिटी सिलेक्शन अथॉरिटी है उसको तो ये नहीं करना चाहिए. अगर जो वांछनीय अर्हता नहीं रखे हुए हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए. अच्छा है इंटरव्यू बुलाया क्यों गया आपको? But I want to know whether PSC can exceed the scope of advertisement. In the matter of calling for interview, na? candidates are there. Appointment is What is the significance of this portion? प्रथमता वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपयुक्तता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा. क्लॉज 9 में और स्पेसिफाई किया है. क्लॉज 9 में और स्पेसिफाई किया है. क्लॉज 9 में स्पेसिफाई किया है. 9 कहाँ पे है? एडवर्टाइजमेंट मतलब इसमें रिट पिटीशन के पेज नंबर पे पेज नंबर 16 पर है. पेज नंबर 16 पर रिट पिटीशन के. एक्चुअली आपने जो ये कंपाइलेशन दिया है ना ये कंपाइलेशन इसमें इतना लेजिबल नहीं है.
जो ये 16 क्या बताना चाह रहे हैं आप? कॉलम नंबर 9 मानो 9 में साक्षात्कार हेतु उपरोक्त अर्हता सूची में सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा जो अनिवार्य अर्हता तथा वांछनीय अर्हता दोनों रखते होंगे। यदि दोनों अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तब उक्त सूची में केवल अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा और स्पेसिफाई कर दिया क्लॉज 9 शामिल किया जाए सर्वप्रथम ऐसे मतलब लिस्ट में ही शामिल नहीं किया जाएगा यदि वांछनीय अर्हता रखने वाला व्यक्ति मौजूद है। सेम हैज बीन कंसीडर्ड बाय द सिग्नेचर। meritorious only interview है। एक पोस्ट पे 10 लोग बुलाते हैं, 10 की लिस्ट कैसे बनेगी? Desired qualification. How many posts were there? One post. They were supposed to call 10 persons. Huh? Maybe. But fact remains that how would you restrict the number of persons to be called for interview? You are referring to page 16. हाँ अभ्यर्थी तथा संग्रहाध्यक्ष 6 गुना अभ्यर्थी समान अंक वैज्ञानिक एक पद वैज्ञानिक अधिकारी 10 अभ्यर्थी समान अंक करने वाले Now, how this 10 people will be identified? अर्हता अनिवार्य अर्हता एक आदमी जो अनिवार्य अर्हता था वांछनीय अर्हता दोनों रखते हैं। यदि दोनों अर्हता उपलब्ध नहीं होते हैं तब केवल ही शामिल किया जाएगा। हाँ so therefore no see, it is see question is that you may be right that 10% to prepare a list of eligible persons for one post you have to have 10 candidates. Suppose you do not have 10 candidates who are having additional qualification and the optional and desirable qualification. Then in that eventuality you can also add on to those persons who do not have desirable qualifications. Now this clause, suppose you add it on. Now if you read that portion which we were reading earlier at page 16, it says आवेदन पत्र केवल प्रथमता वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर ही वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन पर विचार किया जाएगा। मीनिंग भाई कि टू थिंग्स, वन इज the eligibility and one is the selection. Now the PSC, assuming that, has the authority to add on to those persons who do not have desirable candidates. But this clause at page RP advertisement says chain किया ना, chain मतलब persons who are having desirable if available then they will be preferred. And I can see your point.
Of which? No, that we have shown me at page 46. हाँ, ठीक है ना? So all meaning thereby that suppose there are, like in this case, there is only one candidate who is having the minimum eligibility as well as the desirable eligibility. Remaining candidates are not having the desirable candidates. No issues. The 9 persons plus, it will be 1 plus 9 in the select list. But how would you give effect to this clause number, the first page of your advertisement, which says चयन करना है, not the eligibility, but चयन उनका होगा जिनकी who have the essential qualification as well as the desirable qualification. You may call, but selection will be only if it is available. Is there any challenge to this clause? No. Is there any challenge to this clause of the advertisement which restricts? There are two things. One is of preparation of list of eligible candidates, and one is of selection. I'm taking into consideration of the both aspects. Your point, we may agree with you that yes, there may be also candidates who have the essential qualifications only in the list of persons to be interviewed. But looking to this clause which says जिनके पास minimum अर्हता और वांछनीय अर्हता है उनका चयन किया जाएगा. How would you meet this clause of the advertisement? No, unless there is a challenge. See, advertisement has to be understood as it is. Unless there is a challenge to advertisement, how would you read this clause which we were just referring to? Please come to first page of P2. मतलब अगर वो एलिजिबल है, अवेलेबल है, तो उसको तो लेने ही लेना है आपको इंटरव्यू करके. अगर वो नहीं है, then you can think of others. पेज नंबर फर्स्ट पेज है. सेक्शन Mr. Counsel, we cannot travel beyond the scope of advertisement. But my lord, Because there is no challenge to the advertisement. as per the procedure of the MPPSC, my lord, I filed the rules, my lord. My lord, rules, my lord, fifth of the mandatory, my lord. Which rules? Rules of the procedure of the MPPSC. It's No. framed under article, my lord, 3010, my lord. मेरे पास सुनिए. मैंने A1 पेज 25 पर लगाया, my lord. ये आप दूसरी अपील है आपकी? मैंने अपील फाइल की PSC. हाँ. Clause 5 by selection recruitment through interview, page 29, without holding competitive examination. 29. My lord, page 29. हाँ. इसमें my lord दिया है 4A clause, my lord, and B then table दिए, my What lord. is 4A? My lord, consider all applications received in and if necessary shortlist them for interview either through written examination or on the basis of Wait, this criteria relating. see, this is a procedure in general. my lord, उसमें ही Now you please tell me. एक पोस्ट के लिए दिया, अगर एक पोस्ट के लिए है तो इंटरव्यू के लिए कितने लोग मिनिमम होंगे, my lord? We are not disputing that position. My lord, We are going by the clause in the advertisement my lord. which says, For that exclusion. how can you say that whether PSC can ignore that, because PSC acquires the authority to select a candidate as per the terms of the advertisement. My lord, definitely. Procedure you may prescribe for it. My lord.
But the advertisement itself says Right. that if person with minimum eligibility and desirability is available, पहले उनका चयन देखा जाएगा, उसके बाद उनके ना होने पर चयन उसका होगा जो केवल एलिजिबिलिटी रखा हुआ है. तो चयन में भी नॉट ओनली इन प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट में तो मिस्टर मोदी हैज पॉइंटेड आउट देयर हैज टू 1:10 योर नेम मे बी इंक्लूडेड, बट व्हाट अबाउट दिस एस्पेक्ट दैट सिलेक्शन में उनका पहले देखा जाएगा जो एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी और डिजायरेबल एलिजिबिलिटी दोनों वोट करते हैं. दोनों आते हैं. बट माय लॉर्ड इसमें एक इट्स अ कॉन्ट्ररी टू द माय लॉर्ड द कंडीशन ऑफ एक द मिनट, क्या पेज? No. See, question here is that once you are given this provision that persons who are having the eligibility plus desirable qualifications, they will be preferred to persons who are only having eligibility qualification. Appointment चयन किया जाता है भाई. So therefore, but it doesn't run counter to it. No, see, if you want to read page 46, then there should be 10 candidates. Second paragraph. But all said and done. Sorry. Just a minute. क्या कहना है? Mr. How you react to of the order? Running page 26, internal page 13. Under these circumstances, this court is left with no other option. But to hold that the respondent number 3 was not eligible for interview. That petitioner was having minimum as well as Then why he could not be called? उसमें तो हमने पढ़ा अभी जो आपका फर्स्ट नंबर पेज, सेकंड पेज पे आपका ना ये वाला पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए उसमें से पढ़ लीजिए उसको. वांछनीय अर्हता से तात्पर्य है क्या लिखा है? प्रथमता वांछनीय अर्हता. हाँ, वांछनीय तात्पर्य प्रथमतः वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. वांछनीय अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर ही वांछनीय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा. लेकिन वेरी मच स्पेसिफिक विचार किया जाएगा. मतलब इनका यदि वांछनीय अर्हता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध है तो इस पर विचार ही नहीं किया जाएगा. अब उसके ऊपर से जैसे मिस्टर मोदी कहना है कि अगर एक पोस्ट है तो 10 लोग की लिस्ट, मिनिमम 10 कैंडिडेट चाहिए उसके लिए. ऐसा नहीं है. 10 एप्लीकेशन नहीं तो इंटरव्यू नहीं. मतलब इन्होंने रूल्स लगाए
पीएससी ने अपनी पिटीशन के साथ कब बुलाने पड़ेंगे 10, कब बुलाने पड़ेंगे 10, ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो शॉर्टन लिस्ट को शॉर्टन करने के लिए 10 का प्रोविजन है। उन्होंने रूल्स लगाए वही देखने वाले। तो फिर इंटरव्यू का पर्पस क्या है? फिर अगर मान लीजिए एक ही कैंडिडेट है जिसके पास दोनों क्वालिफिकेशंस हैं, तो इंटरव्यू विल बी अ मियर फॉर्मेलिटी। इंटरव्यू का पर्पस क्या है? क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट में बड़ा स्पेसिफिक है कि आई एग्री विद यू, बट देयर शुड बी सम सैंक्टिटी अटैच्ड टू इंटरव्यू आल्सो। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू? ये देखिए इनका जो है पेज 29 पे बी देखिए, where the short listing is to be done on the basis of the educational qualification and or experience. The actual criteria regarding the percentage of marks and or experience, which will differ from service to service, shall be decided by the commission in respect of each such recruitment. The number of candidates to be shortlisted will be as follows. Number of applications up to which no written examination as shown in column 3 was required. Number of post मतलब In cases the number of applications exceed the number of mentioned in column number 2, the maximum number of candidates to be shortlisted on the basis of educational qualification, percentage of marks and or experience. Now, if number of one post is one post, then there shall be 20 number of applications up to which no is column number 3. And just a minute, to which no written examination as shown in column number 3 is required. Yes. अगर 10 तक हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे कॉलम में माइनर सेकेंड है ना 20 लिखा हुआ है। एप्लीकेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ कॉलम नंबर 12 नंबर 2 मींस 20 से ज्यादा एक्सीड होंगे तब ये इसको बुलाएंगे 10 को। तब ऐसा नहीं। एक मिनट समझ लीजिए। Number of applications up to which no examination as shown in column 3 is required. 20. Yes. 20 से ज्यादा होंगे तब 20 अगर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होना है तब 20 बुलाए जाएंगे। और ये इन केसेस द नंबर एप्लीकेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेंशन कॉलम नंबर 2। The maximum number of candidates to be shortlisted 10 तक शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो 20 से एक्सीड कर रही हैं तब 10 बुलाए जाएंगे। तब 10 बुलाए। और अगर 20 से एक्सीड नहीं कर रही तो नहीं लगेगा। इसके नीचे प्रोसीजर बुलाने हैं। नहीं पहले हम उसमें उधर क्यों जाए? हम वी हैव ओनली वन जी है ना जी। तो अगर 20 से ऊपर एप्लीकेशंस हैं तब 10 बुलाए जाएंगे। और कौन बुलाए जाएंगे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है। अगर 20 से कम है तब नहीं है ये तब ये उसके लिए वो इशू नहीं है। अदरवाइज मतलब क्या होगा कि 2 एप्लीकेशन होगी तो फिर इंटरव्यू ही नहीं होंगे। हाँ, तो ये शॉर्टनिंग के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। इससे ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप टू विच एग्जामिनेशन एज शोन कॉलम नंबर 3 इज रिक्वायर्ड। 20 मैक्सिमम बुला सकते हैं। 20 से है तो 10 आएंगे। यदि 30 एप्लीकेशन से ज्यादा है तो 20 से ऊपर नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए 20 से एक्सीड करता है फिर 10 आएंगे। इन केसेस नंबर सुना नहीं पूरी बात। In cases the number of applicants exceed the number mentioned in column number 2, the maximum number of candidates to be shortlisted on the basis of educational qualifications and or is 10. Meaning thereby कि अगर 20 से ऊपर एप्लीकेशंस हैं तब 10 बुलाए जाएंगे और 20 तक है तो 20 बुलाए जाएंगे। ऐसा और ये शॉर्टनिंग सॉरी ये शॉर्टनिंग के लिए
To which no determination. The maximum है ये 20. In cases number of applicants exceeds. Short. नहीं है. तो अगर जिसमें एग्जामिनेशन नहीं है उसमें 20 लोग का प्रावधान है. अगर एप्लीकेशन एक्सीड करता है 20 से ज्यादा तब 10 बुलाए जाएंगे. ये है. तो 10 का जो रेशियो आप बता रहे हैं कि वो 20 से ज्यादा है. हाँ. दोनों चीजें आ रही हैं इसमें. एलिजिबिलिटी भी आ रही है और चयन भी आ रहा है. तो चयन का जो इशू आ रहा है वेदर पीएससी कैन एक्सीड इट्स ब्रीफ इन एक चयन कौन आया ना उसमें देखो. Question here is that is see the question is the first you have to decide who can be selected. Then it comes to the interview merit. If there is no comparison between the persons having the eligibility and desirable qualification because they have been kept in a separate class. The distinction ऐसा वो भी नहीं है. Persons who have eligibility and desired qualification will be preferred in the matter of selection. No, you show me some case law where despite the clear stipulation in the advertisement that who are the persons who will be eligible for selection in preference can be ignored. ना ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. जो आप नहीं वो बीएससी के रूल्स विल नॉट गवर्न द टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट. रिक्रूटमेंट रूल्स भी लगाए. नो रिक्रूटमेंट रूल्स अपनी जगह पे ठीक है बट जो आपने एडवर्टीजमेंट में जो क्लॉज डाला है दैट क्लॉज यू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड देन मेक सबमिशंस. We'll have some other. I'm not issuing notice. I'm only deferring the hearing, but only to facilitate your preparation. But it appears to be some gray area on this. ये मैं कह रहा हूँ चयन किया जब वर्ड चयन हाउ कैन यू स्टेट का जो रिटर्न है वो भी नीचे यही है जिसकी डिजायर क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका चयन होगा. नहीं वही मैं कह रहा हूँ एडवर्टीजमेंट को वेदर पीएससी कैन इग्नोर एडवर्टीजमेंट. आई वांट टू नो दिस. पीएससी ने रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है. बताइए कि ये सिलेक्शन गलत हुआ है. फिर आप क्या बहस करना चाहेंगे इसके ऊपर. जब आपकी योर पॉइंट एक्सीड्स योर ब्रीफ. Better to go through your return and then make submissions. Then we'll pass the order. What was there? Next week. Okay. So, and you also see the total question is can PSC exceeds the terms of the advertisement? Law of procedure is different.
that will only operate after the candidates fulfill the requisite qualifications under the advertisement. But if the advertisement itself says persons having additional desired qualifications shall be preferred in selection, how Supreme Court has reacted to this such kind of clauses? 1B. पायलट ने भी एक राइटली पॉइंट आउट किया था कि सिंगल पर्सन का जो है इंटरव्यू No, I just want to know how to meet this requirement of the advertisement. Can it be molded by PSC? What is the scope of the PSC's jurisdiction in the context of the advertisement? एडवर्टाइजमेंट कंडीशन हाँ, वो आप बताइए. That's a issue. देखिए, so and so for the appellant, appeal number so and so, so and so. Shri Modi on advance notice. Shri Trikhe. Chandela for Bundela for number नंबर 1 के लिए देना. number 1 on advance notice. Parties pray for time to make submissions.